Assalamu alaikum. Welcome to Women panel on the infamous saying, Log Kya Kahen Gey. Hassan Minhaj, comedian, commentator, and the voice of so many South Asian Americans, says that every time a brown dad says, Log Kya Kahen Gey, a star falls from the sky. Little does Hassan know that he could not be closer to the truth in that saying. No, a literal star does not fall from the night sky, but it might as well. Dreams, destiny, on top of talents and capabilities, are often sacrificed at the altar of this unfortunately incurable psychosis. Log Kya Kahenge creates fear and obstacles in the path of many, but even more so in the path of women whose journey is already riddled with hurdles beyond. It often serves as a scapegoat and or logical reasoning for the disallowance of whatever is outside of the box or comfort zone of parents, siblings, friends, and well-wishers. In its wake, the evolution and progression of women stuck in the status quo halts to a perpetual freeze. Log Kya Kahenge has played collectively my life, my mother's life, and my grandmother's life, and probably beyond. It is in fact immortal, and like any disease that pervades society, it must be dealt with like any epidemic, and a cure, or at the very least, a prophylactic found to prevent, if not rid society of it, before it affects future generations. Please help me welcome Seema Mushtaq, Bushra Salman, Nashia Basid, and Sidra Jamil in this amazing panel and having this amazing, inshallah, very needed conversation. I think everybody would agree. Inshallah. Okay, so first let's start with Miss Seema Mushtaq. Seema, as a I'm so sorry, excuse me. Meet Seema Mushtaq. She's been living here in the United States since for 22 years. She's a lifestyle blogger and digital creator on Instagram with the handle at seemas.scape.to.escape. And by profession, she belongs to the IT field. For now, she's doing freelance work related to IT and social media. She loves to help people, especially women, for their empowerment. And she's a strong advocate for women learning and growing in the fast technological advancements so that they can excel in the digital world. Welcome, Seema. Thank you. Then- Thank you. Let's welcome Bushra Salman. She is the mother of two boys, 11 years and 7 years old. By profession, she's a Salesforce solution architect. She moved to the United States 13 years ago, and after getting married, and she belongs to a self-made family who didn't care about this thought. I'll let her elaborate on that. She has a happy and successful married life and has an understanding husband who she considers the biggest blessing of her life. She's a very spiritual person, and I'll definitely let her elaborate on that. Um, Please help me welcome Nashia. She graduated with a degree in political science and mass communications with certificates in women's leadership and public policy from Rutgers University. She's currently a dual degree master's candidate in public policy, city and regional planning at Rutgers. Her work encompasses examining welfare programs with a focus on gaining opportunities for women in government. Welcome, Nashia. And Sidra Jamil, she was born and raised in Karachi, Pakistan, and she relocated to the United States about almost a decade ago. She's earned a bachelor's and now pursuing a master's at NYU. She is unapologetically adventurous. And she also founded Soul Sisters USA as part of her entrepreneurial spirit, and also to help fellow women support and grow. And now it is 24K Women Strong. Welcome, Sidra. Thank you. Okay. So, log kya kahenge? I think this is something that we have heard as women, especially since we were, I mean, probably couldn't even speak a full sentence because from the get-go, whether it was our parents, whether it was our grandparents, whether it was our even our siblings or cousins, we've always heard that in no matter where we go, whether we're trying to choose a career path, the clothes we're wearing, how we, do our hair, or whether or not we do our hijab, whatever it may be, we've always been affected by this infamous mantra per se. Bushra, would you like to elaborate on how it has affected your life? Sure. Assalamu alaikum, everyone. And thank you so much for making me part of this amazing conversation. And yeah, this sentence, "Log kya kahenge," is very relatable, and it has, my life is
डायरेक्ट डिपिक्शन ऑफ एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ लोग क्या कहेंगे, लोग जो भी कहें, उसका एक मजहर है मेरी ज़िंदगी में, ये कहना चाहूँगी। और एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग एक ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं सेंट्रल पंजाब के, जहाँ पे लड़कियों की तालीम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। और आज से 20 साल पहले वहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन को अ, इतना ज़्यादा ख़ास अच्छा नहीं समझा जाता था। और मेरी स्पेशली जो मेरी फैमिली है उसमें मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे फोकस करते थे, जबकि मेरे अदर रिलेटिव्स जो थे और मेरी अदर कज़न्स, they were not into education and all. But my parents took stand on our education, and our relatives didn't want us to proceed education. बट मेरे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने कहा लोग जो भी कहेंगे, हमारी बेटियां पढ़ेंगी और आगे जाएंगी। एक्चुअली हम 2 एल्डर सिस्टर्स थी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देन आवर यंगर ब्रदर एंड देन अनदर सिस्टर। So my parents were not much literate, but they have very progressive minds, and they have very broader vision, and they wanted best for us, like boys, like anyone in life. So they encouraged us. Or my father, in order to support us, went to abroad, and my mother, as a single parent, literally single parent, because my father was not there physically, had to take care of us alone, because कोई भी रिश्तेदार हमारे साथ नहीं था, महज इसलिए क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमारी एजुकेशन पे स्टैंड लिया हुआ था। एंड वी वर इन वेरी रिमोट एरिया, तो हमारे पेरेंट्स ने वी हैड टू स्टडी इन हॉस्टल्स। सो जब हमारे पेरेंट्स ने भेजना चाहा हमें हॉस्टल्स में, देयर वाज नीड ऑफ अ गार्डियन देयर, तो किसी भी रिलेटिव ने गार्डियन बनने से इनकार कर दिया, या कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो लेकिन उस टाइम पे अल्लाह मेक्स वेज, एंड माय फादर, Allah made ways actually, and my father called us, and my father told me and my sister, we were just 15-year and 16-year old, and he told us, you are your guardian, go ahead and get that admission. And as I said, Allah makes ways. Some family friends stepped out, और उन्होंने अपने आप को हमारा गार्डियन एनरोल करवाया हॉस्टल्स में, एंड दे वर देयर व्हेन वी नीड देम। मे अल्लाह ब्लेस देम, मैं आज भी उनके लिए बहुत दुआ करती हूँ। बट द पॉइंट इज, at that point our parents took stand. They put their faith in us, and they said, हमारा ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना, you are boys for us, go ahead and conquer the world. And today, Alhamdulillah, I'm IT solution architect in USA. My sister is SPO in Motorway Police, Pakistan, and she has won federal awards there. And my younger sister is very successful clinical psychologist. She runs her own practice in Lahore. And my brother, mashallah, my only brother, who is like मेरी अम्मी कहती थी बहनों जैसा बेटियों जैसा बेटा, he also mashallah is lieutenant colonel in Pakistan army. So we all are leading successful life, and now our family, now after that it was a chain of क्या कहना चाहिए, chain reaction of दैट थॉट कि उसके बाद माशाल्लाह इतनी लड़कियां इंजीनियर्स बनी उस इलाके से, डॉक्टर्स, सीएसपी ऑफिसर्स। एंड अब माशाल्लाह वो इलाका बहुत ज़्यादा लिटरेट है, और हमारी फैमिली को अब भी हम कभी कभी वहाँ वापस जाते हैं तो बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। एंड it's all because my parents did not care कि लोग क्या कहेंगे, and I'm so proud of them. I'm so lucky to have them. May Allah give them long life. Ameen. That is my story in nutshell, and I will explain what I am doing a little bit right now, and then I will let other people speak. That along with this my IT career, I am teaching kids in Pakistan. There is a institute, Palm Tree International, जिसका ये गोल है कि हम पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं वो, और क्या कहना चाहिए, जो सक्सेसफुल पाकिस्तानी हैं वो और सक्सेसफुल मुसलमान वो बनाएं। तो वो मैं उनका एक प्रोग्राम रन करती हूँ यहाँ से, कम्प्रिहेंसिव कम्युनिकेशन एंड कंपटीशन प्रिपरेशन प्रोग्राम के नाम से। इट्स ऑल welfare institute, and this is like a non-paid job, and that is my passion, and I'm teaching those kids along with my own team here in USA. So it's kind of paying back. So when you don't think कि लोग क्या कहेंगे, you produce confident individuals,
एंड इसके और भी एस्पेक्ट हैं जो कि बीनिश जिस पे सवाल करेंगी और हम उसको डिस्कस करेंगे. फॉर नाउ मैं अपनी स्टोरी को यहाँ पे समराइज करूंगी. थैंक यू. Mashallah. Very nice. I believe I read earlier. Amara Kashif said your parents were so progressive, mashallah. I agree so much with that statement. And unfortunately, one of the things I always find, unfortunately, that happens is, लोग जो होते हैं अक्सर it's not necessarily comprised of बाहर के लोग, अक्सर वो अपने ही लोग होते हैं जो आपको बार बार याद कराते हैं कि लोग क्या कहेंगे. एग्जैक्टली. भला I'm obviously very talkative, as you guys can see, and from that aspect, just that aspect alone, like if मैं बातें करती हूँ and I'm quite loud, I'm obviously former teacher, मगर इस तरह की बातें मुझे अक्सर मिलने को मिलती थी कि लड़कियां इतना ऊंचा नहीं बोलती, लड़कियां आहिस्ता बोलती हैं. Being in the United States, even though being in the United States, I should say, अक्सर सुनने को मिलता था कि बेटा मशरकी लड़कियां जरा शाय होती हैं, थोड़ा देर से बोलती हैं, थोड़ा सोच के बोला करो, सब कुछ जो दिमाग में है वो नहीं बोला करो. तो I mean, and I love my parents, but then obviously they were dealing with that society and they understood कि क्या consequences होते हैं मेरी जैसी पर्सनालिटी अपनी पब्लिक persona में लाने के लिए. पर अक्सर ये सुनने को मिलता था. और I think होता ये है कि that not only does it create obstacles in what you are going to pursue in your life, but it also creates insecurities. And the fact is कि आपके पेरेंट्स जो कि आपको इस तरह के जगह से आए जहाँ पे लड़कियों को इफ एनीथिंग सब स्टैंडर्ड समझा जाता था, उन्होंने आपको इंकरेज किया एजुकेशन के लिए और पुश किया. लाइक माशाल्लाह, अल्लाह करे सबके माँ बाप इस तरह के और आगे को भी इस तरह सब अपने हम लोग सब अपने बच्चों के लिए कर सके इंशाल्लाह ताला. So mashallah, kudos to them. And I would like to, obviously Bushra has a success story in regards to log kya kahenge कि किस तरह उसे ignore किया जा सकता है. Sidra, would you like to comment on how log kya kahenge affected you and your life as a whole? Yes, absolutely. Thank you for having me on this panel. I truly appreciate it. A big shout out to Nusrat Api and Woman to Woman Forum. It's always enjoyable and pleasurable to work with you guys. Um, so I remember in my very very super early days of my marriage when I was in Pakistan, my marriage did not that marriage did not last that long. शादी हुई कुछ early days की pregnancy, and then I was in my third semester, and some people who are very close to me, they came at me and they were like, तुम इतने बड़े पेट के साथ ना मेरा मर्दों के साथ उठोगी बैठोगी, तुम्हें शर्म नहीं आती. अच्छा, सुन लिया, हजम कर लिया. But I, to this day, that jumla still rings in my head. सुबह उठ के 17 रोटियां डालना, बिकॉज 7 o'clock गार्ड को रोटी जानी है. घर में नाश्ता होना है, जो नंदे घर में रह रही हैं उनका, हस्बैंड का और देवर की वाइफ का, तो नाश्ते की जिम्मेदारी जनाब इधर. So, I used to wear an abaya back then because that was the tradition in the family that I had gotten married into, and I was very respectful of that. I think every family comes with their own set of values that you have to adhere to, and then formulate yourself in that sacha. So I continued with my education despite of my pregnancy. I remember I still remember my a day before my delivery, I gave my final paper for knowledge management on a Thursday, and on Friday I delivered my first son, who is now going to be 12 years old in March. His name is Abdullah. He's in Pakistan, and last year I was blessed to have I had an opportunity to spend few days with him, given the fact that I don't have that child on me. So फैमिली ने वहाँ पर रख लिया. मैं जब इमिग्रेट की यूएस, आई वाज नॉट अलाउड टू ब्रिंग माय सन ओवर हियर विद मी. सो दैट्स अ लॉस्ट चाइल्ड फॉर मी एट दिस पॉइंट, जिसके ऊपर मैं सोचती हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी वहाँ रुक गई बिकॉज मेरा बेटा मेरे पास नहीं है. नहीं, जब मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत थी, आई वाज नॉट देयर. और जब मुझे मेरे बेटे की ज़रूरत थी, ही वाज नॉट देयर. एंड ही इज़ माय फर्स्ट चाइल्ड, एंड एज एवरी वुमन understands that passion that comes as part of their motherhood, I want to be, inshallah, in a position where
where at any point in time my son looks up at me and he says कि मैं अपनी माँ के पास आना चाहता हूँ, मेरी माँ उस वक्त इतनी मजबूत हो कि उसको वो उस बच्चे को उस वक्त एंटरटेन कर सके. एंड ऑन दैट थॉट आई प्रोग्रेस्ड इन माई लाइफ ओवर हियर. आई मूव टू न्यू लैंड, new culture, new values, crazy weather over here, the thing that we're not used to it. We were coming from, a place like Karachi, and then yes, obviously moving to a big city like New York, I didn't have that big of a trouble adjusting here. But again, just leaving behind your support system and leaving behind your whole khandan and moving to a place जहाँ पे कोई नहीं है, एक शाम की चाय पीने के लिए, even to this day, I feel like, despite of the fact that I got remarried and I have a susral here, I still feel like, why do we not, why do women not come forward to support women? क्यों औरत ही दूसरी औरत को खींच रही है? If I could have had some support from the women in my family, the ones that are here, I think we all can progress so much better, and we all can deliver so much to the community, to ourselves, to our children, because it takes a village to raise a woman and to make her successful. मेरी success मेरी नहीं है. मेरी success मेरी उस सहेली की है जिसने मेरे बेटे को देखा जब मुझे क्लास लेने जाना था, जब मैंने सुबह के 6:30 बजे फोन किया कि यार my babysitter, she she dished me and I need childcare because I don't have childcare arrangement at this point. So she, offered to take care of my daughter who's a year and a half. She offered to take care of my son who's 7 years old, but it was a Saturday and I had to, like, make it to my 7:30 class in the morning. So I could not, a lot of times when I step out, कैसी माँ है, बच्चों को फेंक देती है, मुझे ये जुमले सुनने मिले हैं, बुरी माँ है, औलादें पैदा करके फेंकी हुई हैं. अच्छा, एक कान से सुना, थैंक यू जिन्होंने मुझे ये बोला. एंड मैं कहती हूँ, आपने जो मेरे ऊपर पत्थर फेंका है, मैं उस पत्थर से अपना छोटा सा घर बनाऊंगी, और मैं उस घर में ना सिर्फ खुद रहूंगी, अपनी औलादों को रखूंगी, अपने स्पाउस को रखूंगी, अगर वो मेरे इरादों में साथ हैं मेरे, अगर के वो हैं, जो कि वक्त बताएगा, और आई थिंक at that point in time, I just feel that we should think that हमारे ऊपर जो पत्थर फेंके गए, जिनसे हमने एक घर बनाया है, उस घर में हमें उन लोगों को भी जगह देनी है जिनके ऊपर उस दौर में पत्थर फेंके जा रहे हैं, ताकि वो औरत आगे बढ़ सके, ताकि वो औरत कुछ कर सके, to give back to the community and to, like, hone her own skills and, make herself more successful. And if we as mothers are successful, we can raise a successful family, we can raise a successful generation. We can raise a son जो हम कभी शिकवा करते हैं कि अच्छा यार काश मेरा मियाँ साहब ऐसे कर लेते तो ये अच्छा होता, वो अच्छा होता, बट हम नहीं चाहते कि हमारी बहुएं आके हमें कल वो बात बोले. So we need to be mindful of that. We need to change that mentality. We need to be that change कि अच्छा मेरी सास ने अगर मेरे साथ ये किया है, I'll make sure मैं अपने बेटे की या मैं अपनी आने वाली बहू के साथ ये नहीं करूंगी. मैं अपने आप को इतना मजबूत रखूंगी कि मुझे वो इनसिक्योरिटी को भरने के लिए मुझे अपनी बहू की तजलील नहीं करनी पड़ेगी, अपनी इनसिक्योरिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, कि मैं उसको दिखाऊं कि तुम एक बुरी माँ हो, तुमने क्या किया. अल्लाह बैठा है. मुझे लोग बोलते हैं तुम अपनी फैमिली को इन्वॉल्व क्यों नहीं करती, तुम इससे बात करो, तुम इससे बात करो. हम कभी कुछ ऊंच नीच अगर होती है तो मुझे बोला जाता है अपने फादर को इन्वॉल्व करो, अपने मामू को इन्वॉल्व करो, अपने फला को इन्वॉल्व करो. क्यों भाई? मेरे सीधे हाथ, मेरे उल्टे हाथ, मेरे ऊपर मेरा अल्लाह बैठा है. मुझसे बात कीजिए. If there is a change, my father cannot bring that change, my mamu cannot bring that change, I will bring that change. I will address your concern, and the only person who can make a difference is me. So I'm here, speak to me, and come at me with love. If you come at me with love, I will not just give back in multitudes of love and respect, but I will also have appreciation for you, and I will also know that you're together with me and my side, and you're my strength, rather than you pulling me down. So लोग क्या कहेंगे? लोग मेरा बिल नहीं भर रहे, लोग मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं भर रहे, लोग मेरी गाड़ी की किस्त नहीं भर रहे, लोग मेरे सामने प्लेट पे खाना नहीं रख रहे. अगर मैं अपनी बेसिक नेसेसिटीज खुद से सेटिस्फाई कर सकती हूँ तो मैं आगे भी चल सकती हूँ. So
लोग मेरा घर नहीं चला रहे, मैं चला रही हूँ. तो अगर मैं चला रही हूँ ना, so I will keep that respect element alive, and I will also request women to take a stand and stand on their own, believe in the masbuti of their own 2 feet, believe in the strength of their own 2 feet, and know that they can do it. Know that over here it is difficult to find support, but if you do, hone on it, take charge of it, and use your resources wisely. That's all I would say. So, log kya kahenge? Don't let that stop you. Get in touch with me. Get in touch with some ladies on our platform. We have great resources around. Um, just don't let anything stop you. You only have one life to live. प्यार से जीना है, खुश रह के जीना है, इज्जत से जीना है, बिल्कुल जिए. कोई, you know, at the end of the day, हम सबको पीछे जाना है. So we are answerable to the God up above. And on that note, I would just leave it कि हम जो बोते हैं, that's what we have to reap at the end of the day. So just give back love, and you're gonna get back love in return. I've seen अल्लाह ताला ने मेरे लिए ऐसी जगहों से रास्ते बनाए हैं जहाँ मैं सोच नहीं सकती कि कहाँ से हुआ ये. So alhamdulillah for that, and alhamdulillah for the tough days also. जब खूब रगड़े लगते थे, पाँव से खून बह रहा है और ये ऑफिस पहुंच गए और सफेद जॉगर्स में से नीचे खून बह रहा है, और माय बॉस टोल्ड मी कि सिद्रा तुम्हारे पैर में ब्लीडिंग हो रही है. And I was like, oh, I didn't even realize, because बाहर इतनी बर्फ पड़ी हुई है, पैर frozen है. By the time I reached from taking the Staten Island ferry, jumping from train to train and making it to my office in Disney, which was in Midtown Manhattan, I did not realize that last night जब मैं bulb change कर रही थी, I was a single mom back then, bulb टूटा, गिरा, हाँ मेरे पैर में गई कांच, but I took it out. But I did not realize a piece of it was still inside my foot. Not until I made it to the office. So she made an arrangement with a podiatrist, and I had to go see a podiatrist who was like 2 minutes from my office building. But did that stop me? No. I can't let that stop me. I owe it to my kids. I owe it to my family that I live with. I owe it to I owe it to the people who are part of my struggle. I owe it to my mamani जिनके घर मैं आज बैठी हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे दिल में तकलीफ है. क्यों? क्योंकि मैं अभी अपने घर में नहीं हूँ. क्योंकि मुझे तकलीफ है. Because I was not I was made feel I was made to feel low of myself. Why would I put myself in that situation? I believe in removing myself from that situation, taking a step back, let things cool down. हंगामे करने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है, गर्मा गर्मी होती है. Take a step back and just let things breathe out. You go back. आप खुदा ना खास्ता कोई drastic step नहीं ले रहे, आप कोई, you believe in giving space, because then the element of respect comes back, the element of love comes back. So on that note, I would give the mic back to Beanish. I think that was just too emotional. No. Mashallah, you actually made several good points. I think everybody will agree with that. I think one of the very, I think, important points that you made that is very necessary to voice, that we're always afraid to say out loud. It's the elephant in the room at every dawat actually, is that women need to support women. Unfortunately, कहने के लिए ये बहुत आसान है. हम सब कहते हैं कि नहीं, हम अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को सपोर्ट करते हैं, मगर really, unfortunately, and I'll say it out loud and I'll be that person because I often am, ज़रूरी नहीं है. जो आपके so called well wishers हैं, जो आपको जिसे कहते हैं हाँ हाँ करो करो, मगर it's more like कि एक तमाशा देखने के लिए करो. Yes. एक ये होता है किसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए करो, हाँ हाँ तुम जरूर करो, और फिर वही बंदे जो आपको कह रहे होते हैं, वही फ्रेंड्स, लड़कियां, औरतें जो कह रही होती हैं कि ये करो, वही आपको बाद में पता चलता है कि आपके पीठ पीछे अस्तगफिरुल्लाह बातें कर रहे हैं. एंड यू मेक अ वेरी गुड पॉइंट कि हमारे हाथ पैर मौजूद हैं. ये भी एक जिसे कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल एक एलिमेंट है ये लोग क्या कहेंगे के अंदर, इन द सेंस कि एक औरत को, and it goes back to like what our topic of W2W is for this year, break the bias. Women are not considered writers of their own destiny. Unfortunately, they're not considered writers of their own destiny, to the point कि even जब उनके अपने घर के अंदर कोई इस तरह की इशू हो रही है, भला उनकी मैरिज में है, भला उनके खानदान में जो भी है, भला उनकी जॉब पे, they are not considered the person that can make that decision. और हमेशा उनको साइड किया जाता है कि उससे पूछ लो, अब्बू से, अम्मी से, मियाँ से, भाई से. कभी भी, इवन जब वो बुजुर्ग भी हो जाती है, तब भी उनको कहा जाता है बेटे से पूछ लो. कभी भी किसी पॉइंट में लाइफ में, अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में, I know there's never a point where the women like, and not to say कि पांचों उनके बराबर होती है, it doesn't happen in some families and in some places,
बट मोर ऑफन देन नॉट यू हियर कि औरत को हमेशा पूछ कहा जाता है कि उसकी इनकी लाइफ में जो भी सरबराह, जो कि ऑब्वियसली मर्द है, उससे पूछो। कभी भी उसको नहीं अलाउ किया जाता कि वो अपना डिसीजन खुद मेक करे. So that's one mindset we definitely have to change. We have to understand that women and men equally all have ownership of their life, of what they should be. I mean, अब आप you know जहाँ पे भी हो, आप अपनी जिंदगी के लिए आप ही बेहतर डिसीजन कर सकते हो. That's a fact of matter. You're the one that has to survive through whatever it is that you're going through. No one else. So ये सोचना कि इस बेसिस के ऊपर सरवाइव करो कि लोग क्या कहेंगे, ओ इसके साथ ये हो गया, इस तरह है, उस तरह. No. At the end of the day, अल्लाह ताला उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो अपने लिए खुद वसीले पैदा करते हैं. और अल्लाह ताला यकीनन आपके अगर मुश्किल दे रहा है तो आसानी भी देगा. अगर कोई आपके बारे में बात करे, वही लोग देखना कि वही लोग आपकी भी तारीफ करेंगे, देखो इसने सर्वाइव किया, इस चीज को सर्वाइव किया, So keep that in mind always. And going back to that, I would like to shift the conversation towards the religious aspect. जैसे मैं कह रही थी कि हमारा हमें बात नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में. हमारे दीन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मेरी अम्मी हमेशा कहती होती थी कि अगर आप किसी का पर्दा रखो, and I'm pretty sure this is a hadith as well, कि किसी का आप पर्दा रखो, but I will ask Nashia to and Seema to like clarify me on this, कि किसी का पर्दा रखो. अगर आप किसी का पर्दा रखो, किसी भी लड़की का या आदमी का, तो कयामत के रोज, कयामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला आपका पर्दा रखता है. और ये चीज हम ऑफन फॉरगेट कर जाते हैं जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए, दावत के ऊपर कोई टॉपिक नहीं है, गॉसिप करो, गॉसिप करो, बुराई बुराई खेलो, जैसे कभी कभी कहते हैं लोग. हाँ, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट, नाशिया, फ्रॉम अ रिलीजियस स्टैंड पॉइंट, लोग क्या कहेंगे, लाइक where does that even come in? Absolutely. And thank you so much, Beanish, again, for initiating this discussion. And I just want to say, just sitting here, I'm feeling so inspired from hearing Bushra and Sidra's story. And I can't wait to hear what Seema has to say on this topic, because this is such an important topic. And especially coming from a South Asian perspective, we face this on a daily basis. Every single day, we're hearing so many comments here. You shouldn't do this. You shouldn't do that. Don't do this. Don't do this. Don't do that. And this is ingrained from a very beginning. So as soon as you're born, people already start coming over. They start telling you, oh, make sure your daughters don't do this, make sure your daughters don't do that. So from the very beginning, we had this kind of ingrained into our perspective and ingrained into our upbringing. And in the process of always worrying about others, we forget who we are and what we really want. So we put our dreams on hold, we stop taking opportunities, and we just kind of tag along with what is the norm, what is the usual, what is expected of us. And what's so important to understand is that culture is not always right. So a lot of the things that we are brought up with, that we are told, it's from our culture. And unfortunately, while I am so proud to be Pakistani, from our food to our clothes to the way we celebrate, being Pakistani is something that I'm so proud of. But unfortunately, in our culture, sometimes we tend to mix up religion with culture. So instead of remembering that we have so many powerful and influential women in our religions that have taught us how to break barriers, from whether we look at, the wife of the Prophet ﷺ, Khadija, who was a businesswoman running an entire business, to, Khawla bin Thalaba, who is, one of the modern women directly mentioned in the Quran, and Allah speaks about her, we tend to kind of go with the flow. So, Binish brought up a really important point about how when we start gossiping about other individuals, especially when it comes to women, we kind of get caught up into, the whisperings of shaitan. And we think that, oh, like, did you see what she was wearing? Did you see how she went out here? Did you see how like she did that? Did you see this is all just part of our gossip, part of those ideas that are ingrained into our culture, and so against who we stand as Muslim women. So it's so important to remember, one, that we have influential women in our deen, in our history, that we can always look up to, that we can always refer to whenever someone tells us that, oh, you're not supposed to be doing this, oh, this isn't okay to do. We can always point it back to these women who single-handedly changed the course of history following the Prophet ﷺ, and while still maintaining, their feminine identity and being proud of who they are. And then the second aspect of that I think is so important to remember is that whenever we fall into with society's ideas and norms of who we should be,
we forget who we are, and we forget the very core that the reason why we were put onto this earth is to answer only to Allah. So we don't answer to people, we don't answer to society, we don't answer to their norms or expectations of us. We only answer to Allah, because at the end of the day, it's just you and Allah. And on the day of judgment, it's just going to be you and Allah. And on that day, you're not going to care about, oh, what were they saying about me? Oh, what did they tell me this? Oh, I shouldn't have. You're just going to care about, did I do what Allah wanted me to do? Did I, was I sitting there at that dawat and, like over, that plate of like samosas and, sipping my chai and being like, did you see that? Did you think of that? What did you? We're going to wish that we had never done any of that. We're going to wish that we had actually just focused on our duties and responsibilities to Allah and just maintained that. So again, remember, it's so important to look back to our feminine, powerful, influential leaders in our Muslim history, especially the women, and to just remember that at the end of the day, it's just you and Allah, no one else. बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। Mashallah, thank you so much, Nashia. That's exactly the angle that I wanted. But you say it so well and so eloquently. Thank you for that. Seema, would you like to add to that? I know that you have a more societal aspect and perspective on this vaba. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच वुमेन टू वुमेन फोरम का और नुसरत जी का कि हमें उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। देखें, अब मेरा मानना ये है कि अब हमारी ख़वातीन और ओवरऑल सोसाइटी जो है वो इस तरफ जा रही है कि दे डोंट केयर एनीथिंग अबाउट एनीथिंग के लोग क्या कह रहे हैं। स्पेशली हमारे बच्चे, हमारे टीनेजर्स हमसे ज़्यादा मैच्योर हैं और वो हर एस्पेक्ट जो है वो अपना रखते हैं, दीनी भी और दुनियावी भी, और वो बहुत माशाल्लाह मैच्योरिटी के साथ जो है बिहेव भी करते हैं और सोचते भी हैं। और अब हमारे सोसाइटी में से आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है कि ये चीज़ें कम हो रही हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही, मैं एग्री करूँगी कि हम बहुत दफ़ा कल्चर जो है वो हम अपने रिलिजन से मिक्स अप कर देते हैं, क्योंकि आवर कल्चर इज़ नॉट आवर कल्चर। वो आया है बैक होम डिफरेंट उससे क्या कहते हैं बैकग्राउंड से। तो हम ये करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यही होती है क्योंकि हमें नॉलेज कम है और हमारा इतना एक्सपोज़र नहीं है, तो लोग बातें करते हैं। लोग बातें हर तरह से करते हैं, हर जगह करते हैं। अब देखें, आपको अपीयरेंस पे लोग जज करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इंटरकनेक्टेड हैं। जो लोग क्या कहेंगे बेसिकली उस पे बेस करता है कि आप लोगों के बारे में जानते कुछ नहीं हैं, बट अपना असम्पशन, रॉन्ग असम्पशन्स बनाते हैं। उसके बाद उनको जज करते हैं उनकी अपीयरेंस पे, उनके बोलने पे, उनकी बाकी ज़िंदगी गुज़ारने के तरीकों पे, वो क्या कर रहे हैं, और हम फिर उस पे गॉसिपिंग करते हैं दूसरे लोगों के साथ मिलके। और हियर कम्स द लोग क्या कहेंगे, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि वी डोंट नीड टू केयर अबाउट पीपल। क्योंकि जब मैं अपनी जैसे बात करूँ, मैं अभी जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो अभी मैं जब 35 प्लस थी तब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसे। मुझे बहुत सारे लोगों ने मज़ाक में बोला कि इज़ दिस द एज रियली सीमा, व्हाई? बट आई डिडंट टेक दोज़ पीपल सीरियसली, क्योंकि वो उनकी सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं थी। नंबर 2, अल्लाह ताला ने मुझे जो है इस नेमत से नवाज़ा, उसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उस ज़िम्मेदारी को पूरा कर सकूँ, तो उसने मुझे नवाज़ा। People are no one to talk about anything in your life. They don't have to have any rights. So उन्होंने मुझे, मेरे ना बच्चे को पालना था, ना मेरे साथ उसकी जो है ना परवरिश करनी थी, ना उन्होंने पैसे देने थे, बट लोग यहाँ बैठे हैं बातें करने के लिए, चाहे वो आपसे डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें किसी और से। तो लोग तो कहते ही रहते हैं। इसी तरह जब मेरे अंदर बड़ा खौफ था, मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट चूँकि पब्लिक है, तो पहले मैंने उसे पब्लिक करने से पहले बहुत दफ़ा सोचा, और अभी-अभी भी ये थॉट आती है मेरे माइंड में कि लोग यकीनन सोचते होंगे, कहते होंगे, "अरे! ये तो स्कार्फ़ पहनती हैं,
बड़ा इन्होंने अकाउंट पब्लिक किया हुआ है, अरे अच्छा ये तो गाने भी डालती हैं, हिजाब पहनती हैं बट ये ऐसे करती हैं, हिजाब पहनती हैं लेकिन ये जो है ना ये तो हिजाब ही नहीं हुआ, ये तो हिजाब करने का तरीका ही नहीं है, ये कैसे बैठती हैं, अच्छा ये इनके पास तो डालने के लिए कुछ ही नहीं है, फालतू चीज़ें डालती रहती हैं। मेरे दिमाग में ये चीज़ें बहुत आईं, लेकिन मैंने उसको पीछे छोड़ दिया क्योंकि ये मेरा शौक था कि मैं उसको आगे करूँ, मुझे अच्छा लगता है अच्छी चीज़ें शेयर करना, तो मैंने उस चीज़ को नहीं सोचा। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर सकते, अपने पैशन, अपने शौक को हासिल नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से नहीं गुज़ार सकते। तो मेरा कहना यही होगा कि लोग अज़ल से अबद तक कहते रहे हैं, कहते रहेंगे, तो उनके बारे में हमें उनके ख़यालात को पीछे छोड़ के और अपनी ग्रोथ पर फ़ोकस करना चाहिए, और बस, और लोगों का काम है कहना एट द एंड, और वो कहेंगे। तो बस यही कह सकती हूँ मैं। आई एग्री विद दैट 100% सीमा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों का काम है कहना और हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड आई थिंक इन स्पीकिंग ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एग्जांपल, राइट, हमेशा हम लोग अब अभी हम इधर बैठे बात तो कर रहे हैं, यकीनन हम अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते होंगे कि यार हम क्या, लोग क्या कहेंगे, हम इस पे स्टक रहते हैं, इसको छोड़ दो, मगर सोल्यूशन एक रियल सोल्यूशन होनी चाहिए. Rashid Manzar is saying the whole world is a provision, the best object of the benefit of the world is a pious woman. I agree with it. Pious women, piety, how defined? We speak about piety, especially, trying not to be controversial, but piety, unfortunately, is often defined as the outer look, but the inner often is lacking. Number one thing I think जो हम solution, and I'll start, जो हम I think offer कर सकते हैं किसी को इस disease को cure करने में, is that कि कल को अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ आपकी भला जो भी हो, जो भी मुखलिस हो आपका, भला आपकी दोस्त हो, आपकी बहन हो, जो भी हो, अगर आपको किसी के बारे में कोई बात करे तो आप ये कहो, हाँ तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है. दैट्स इट, दैट्स सिंपल एज दैट. इस जो भी कोई कुछ करता है, भला वो जो भी अपनी लाइफ के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अपने करियर के लिए, अपने लिए जो भी वो डिसीजन कोई कर रहा है, या भला वो आदमी है या औरत फॉर दैट मैटर, आदमियों के बारे में भी बातें अक्सर की जाती हैं इनफैक्ट. तो बस इंसान, सिंपल एज दैट, मैं कहूंगी कि ये कहो, अगर आपको कोई बात करते हो कहो अच्छा तो फिर क्या हुआ, बस दैट्स इट. आई थिंक इट्स एज सिंपल एज दैट. एंड ये चीज एक अभी मेरे 2 दिन पहले इनफैक्ट एक यंगर जनरेशन की बात थी, और वो यही मुझे कह रहे थे कि हमारी जनरेशन केयर नहीं करती, जैसे सीमा कही थी कि वो कहती हमारी जनरेशन नहीं केयर करती इस बारे में. तो मैंने उनको कहा हाँ, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरी जनरेशन स्टिल केयर करती है. तो उसको उसकी वजह से थोड़ा सा हमें उसको फिक्स करना होगा, थोड़ा हट के बात करनी होगी, कहना होगा कि हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कुछ करे, हमें इससे क्या है, या मजाक से इवन कह दो यार मुझे उसकी गुनाह नहीं चाहिए प्लीज उसके पास रहने दो. तो आप क्या कहेंगी बुशरा, आप क्या कहेंगे, आप इस कैसे रिजॉल्व करेंगे इस मसले को? मीनिश, मेरा ख्याल है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू. अगर आप इस सोच की जो हम परवाह करते हैं उसकी साइकोलॉजी पे गौर करें ना, तो आई थिंक दैट साइकोलॉजी इज डिजायर ऑफ वैलिडेशन. Actually, we want validation and approval of people. Why we want that? So I think we need to work on ourselves. It all begins from us and it all ends on us. So जब हमें किसी की validation नहीं चाहिए होती ना, और हमारे लिए जैसे कि सिद्रा ने भी mention किया, राशि ने भी mention किया, at end of the day it's just Allah and you, right? So वो एक कहावत भी है जो हमने बहुत आजकल सुनी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग आखिर में यही कहेंगे, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. That is very strong saying, right? Those people are, हम सबने experience किया, are nowhere when you are in dire need, right? So why seeking validation of those people? Why not worrying about what Allah subhanahu wa ta'ala wants from me? And that's all. So I think लोग क्या कहेंगे का एक ही solution है, मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है. So आप बैठ के सोचिए, आप अपने इर्द गिर्द वालों की हकूक पूरे कर रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी को अपनी टर्म्स पे जिए भी. यू डोंट नीड एनीवन्स वैलिडेशन. सो मेरे ख्याल में इसका एक ही सोल्यूशन है. यू कैन नॉट गो इनटू बिलियंस ब्रेन, ट्रिलियन ब्रेन्स एंड मेक देम थिंक नहीं जो मैं कर रहा हूँ प्लीज वो सही है. ठीक है, तो इट बिगिंस फ्रॉम यू, इट एंड्स ऑन यू. सो यू नीड टू चेंज योर ओन थॉट. और यही चीज जो है हमने वी विल कम टू दैट पॉइंट के
हमने अपने बच्चों को कैसे करके दिखानी है, हमने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे करके दिखानी है चीज। तो मेरा मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है कि और खुद क्या कंट्रीब्यूशन करें। एक तो अपने लिए तो ये हो गया कि वैलिडेशन सीख नहीं करना। दूसरे के लिए क्या है कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। आप किसी शख्स को भी देखें तो आप ये सोचें कि वो शख्स जो है वो तो हो सकता है उसकी बेनिफिट ऑफ डाउट दें। मैं उजर देने का हुक्म हमारा अल्लाह ताला देता है, हमारा दीन देता है कि आप बेनिफिट ऑफ डाउट दें लोगों को। तो जब आप बेनिफिट ऑफ डाउट देने लग जाएंगे तो आप लेस जजमेंटल होंगे। आप लेस जजमेंटल होंगे तो आप अपनी सोसाइटी में एक ऐसा बंदा क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, राइट? सो you make your presence comfortable for other people. So this is two ways, like for your own self and for others. That's my opinion. बिल्कुल। बिल्कुल एग्री करूँगी मैं कि आपने जो बात कही है कि जो चेंज है ना वो अपने अंदर से ही शुरू होता है इंसान के। हम ऐसा तो बोलते हैं लोग क्या कहेंगे और लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन हम भी एट सम पॉइंट हम ये काम कर रहे होते हैं। हम उसको कबूल करें या ना करें, बट हम Exactly. बहुत टाइम्स पे चीज़ें कर रहे होते हैं। चूँकि हम अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं, तो हमें उस अपने ऊपर सबसे बड़ी जो है ना तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हम पूरी दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, उनका पर्सपेक्टिव नहीं चेंज कर सकते, मगर हम इतना काम कर सकते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है वो ये है कि हम किसी को अजम्पशंस ना करें। किसी के बारे में कोई बात आ रही हो, सबसे पहली बात तो ये कि कोई ऐसा काम ना करें जो कि हमारी एथिक्स और हमारे ऑफ कोर्स रिलीजन के खिलाफ हो। फिर उसके बाद आप किसी के बारे में रॉन्ग अजम्पशंस ना करें, किसी को जज ना करें। और जब आप ये सब काम अपने अंदर से स्टार्ट करेंगे, तो हम अगर यहाँ 5 लोग बैठे हैं, अगर हम 5 लोग ये काम कर लेते हैं और आज से हम ये कोशिश करते हैं, तो आगे जो है ना लिटिल बाय लिटिल खुद ही चेंज आता जाएगा। और चेंज हमेशा इसी तरह से आता है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को चेंज करें, फिर आप दूसरे से एक्सपेक्ट करें कि दूसरा भी ऐसे ही करेगा। और फिर अगर आप ये कर रहे होते हो तो अल्लाह ताला यकीनन आपकी हेल्प करता है ये काम करने में, आपको इम्प्रूव करने में, और फिर आपको दिखाता है कि चेंज इज़ कमिंग। तो इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल। Nashia, what would you like to add? Would you like to add to that? Yeah, absolutely. I think these are all such great suggestions that everyone is putting in. And for me, I'm thinking personally, one of the main things that we have to do is we have to stop measuring ourselves against other people's version of success. So it's so important to understand that each person's version of success is different for everyone. So what I think that individuals should do is, just write down your goals, write down what you want to do, write down what your version of success looks like. And on the days when it gets really tough, and there are going to be those kind of days, there's going to be days where you're like, is this worth it? Like, am I doing the right thing? Am I like, should I just continue? Should I just give up at this point? This is too much. I can't do this anymore. You're going to have those kind of days because everyone has those days. So on the days when it gets really tough, take that sheet out again, look at what you've written, what your version of success is, what your goals is. Look at that list carefully again and again, and then reaffirm everything on that list by saying, you know what, today is a tough day, but this is my version of success. Someone else's version might look completely different, and that's totally fine because this is what I want. So, just by writing it down and revisiting those goals on really tough days, I think that's something, that people can implement in their lives that'll help them on the days where you just want to give up and you'd rather not continue. Agreed. And Sidra, would you like to add to that as well before we sign off? Inshallah. Sure. I just have a quote that's really close to my heart. Open hearts, open mind, and open doors. Help people change their lives by opening your heart to them, opening your mind and accepting their ideologies, and be more accepting of their faith, their cultures, their backgrounds, and invite them with open arms to your home, your place of solace. On that note, I'd just mic drop. Amazing. Amazing. Mashallah. So before I sign off, thank you so much, Seema, Sidra, Nasha, and Bushra for joining me. And I hope you guys enjoyed this conversation. I quickly read a comment that said, why is it so important to change this thought? It's important to change this thought because it's affecting the future, the potential, as I said before, and literally the destinies of so many.
So it is very important to change this thought process. We need to get rid of this thought process and worrying about other people. So before I sign off, here's a little something. जलन की आग चारों ओर बरकरार रही, जलन की आग चारों ओर बरकरार रही, और जालिम जमाने की बातें भी बेशुमार रही. हिकमत के नाम पे फतह करने आए तो बहुत, हिकमत के नाम पे फतह करने आए तो बहुत, पर अपनी मर्जी की मलका मैं सदाबहार रही. So on that note, design your own destinies, design your own futures, girls, ladies, daughters, mothers, everyone. All is not lost. Keep surviving, inshallah. Allah Hafiz. Inshallah. Thank you so Thank much, you. everyone. Thank you. Thank you. Hafiz. Hafiz.